Hello students, so today we are going to learn this lesson called 3 Visions for India. Okay, now what do you mean by vision? Vision is basically a dream, we can say, or an idea, we can say, or just an idea or dream which we think or which we have basically. So that is what is vision. So this was 3 visions for India. Now this chapter is about Dr APJ Abdul Kalam कि उन्होंने इंडिया के लिए कौन से 3 विजन्स देखे थे, कौन से 3 सपने, कौन से 3 ड्रीम्स देखे थे. इट इज़ ऑल अबाउट दैट. ओके, सो लेट अस सी व्हाट द चैप्टर हैज़ टू से. Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states 3 visions for India based on the achievements and progress that has witnessed in the history of the nation. And during his own career as a missile scientist, Dr. Kalam's 3 visions for India are freedom, development and standing up. फाइन. तो अभी हम लोग ने क्या देखा, दैट वी ऑल नो दैट ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ इंडिया, यू नो. तो वॉट ही सेड दैट फादर ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम स्टेट्स 3 विजन फॉर इंडिया. कि उन्होंने है ना 3 विजन्स सोच के रखे थे इंडिया के लिए, दैट ही हैड दिस 3 आइडियाज़, 3 ड्रीम्स फॉर इंडिया. On what basis? Based on the achievements and progress that is witnessed in the history, that what all we have achieved till now, what all we have progressed till, what all in which fields we have progressed, considering that he had 3 visions for India. And during his own career as a missile scientist, and also during his own career, he was a missile scientist, right? So during his career, as well as during our India, like during the time when we have considered things like, जैसे कि अभी एक तो वो मिसाइल के साइंटिस्ट थे, राइट? तो उनका जितना एक्सपीरियंस है वो, प्लस ड्यूरिंग द टाइम जब भी उन्होंने पहले पास्ट में देखा है, ही हैव सीन थिंग्स अचीव्ड इन आवर पास्ट, एंड ही knows that what all we are, what all are our strengths and all such things. So according to him, what were the 3 visions for India? First was freedom. Okay, that freedom was his first vision for India. The second was development. We are still considered as a developing nation, so that is what his vision was, that it should be a development plus standing up. Now what do you mean by standing up? Standing up means being brave and to face challenges. ऐसा, that कभी भी कोई भी चैलेंज आए या कोई भी प्रॉब्लम आए कंट्री पे, द कंट्री शुड बी ब्रेव इनफ टू फेस इट, वैसे. सो दीज ऑल वर द 3 थिंग्स, द 3 विजन्स विच अब्दुल कलाम सॉ फॉर इंडिया. Okay, the focus of his presentation is on developing India to its fullest potential. उनका focus क्या था? That India should be developed to its fullest potential. Potential is capacity, कि जितना हमारा capacity है हमारे country का, उतना हम लोग developed होने चाहिए, while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern time. क्या है देखो, while standing up to the rest of the world, कि कोई भी problem आए, any problem if a country is facing, we should be strong enough like other countries to stand up and face it with full validated means confirming with a proof, that with self-respect for the achievements. Okay, we should stand up whenever we are facing whenever a country is facing any problem, we should be ready to stand up, not just stand up but to face it equal with other countries. कि जैसे other countries खड़े रहते हैं, they are ready to face all such problems, even we as a country should be ready to face it, वैसा. इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस. मतलब क्या बेसिकली कि वी शुड, इसमें क्या हो गया, इफ़ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस. मतलब क्या, दैट वी शुड कम्युनिकेट, वी शुड हैव टाइम फॉर अदर्स. वैसे मतलब बेसिकली क्या, दैट वी शुड कम्युनिकेट विद अदर्स. वाई? सो दैट वी कैन गेन द नॉलेज, एंड देन
when you have knowledge about something, people will respect you, and then people will respect you, you will receive the respect, वैसा. And that is why we say that give and take respect, right? So it basically he wants to say that our country should have all the knowledge, कि हमारे पास सारे चीज़ों का knowledge होना चाहिए, so that अभी हमारे पास knowledge है तो whenever a country is asking for help we can help it out. And that is how one country respects another country, and that is how respect is taken and given. So this is what he's trying to say, that if we are not free then no one will respect us, वैसे. I have 3 visions for India. This was during his speech. In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us. ठीक है? Captured our land and conquered our mind. From Alexander's onwards, the Greek, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. कि वो वही बोल रहे कि जो हमारा 3000 years का जो experience है उसमें people have just come over here and invaded us. Invaded is to enter a country and occupy or capture it. So he is saying us the same thing, कि जो भी आए हमारे country में they have only came here and ruled or captured us. Then be it the Greeks, the Alexander, the Portuguese, सब ने वही काम किया है. The British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. Took over का meaning भी वही होता है, captured या rule करना, वैसे. Yet we have not done this to any other nation. कि हम लोग पे तो इतने सारे लोगों ने आके capture किया and rule किया, but we never did that to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture and their history, not tried to force our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. कि वो वही बोल रहे कि how Britishers came and they wanted us to behave like them or to get well into their systems, but we never did that. We never tried taking someone's freedom or taking someone's culture, वैसा. Why? Because we always believed in freedom. हमारे country ने हमेशा किस में believe किया है? Freedom में, कि people should be free to do whatever they want, वैसा. That is why my first vision for India is freedom. That is why he's saying that my first vision is freedom. Why? Because we never disturbed anyone's freedom or any other country's freedom. That is why I believe that freedom is my first vision for India. I believe that India has its first vision of freedom in 1857 when we started the War of Independence. कि वो वही बोल रहे कि कब से विजन तो फ्रीडम का था, कब से? From the War of Independence. It is this freedom that we must protect and nurture and build on. Nurture is to क्या? To care, वैसा. If we are not free, no one will respect us. True, right? कि अगर हम if we are not free in the sense that if you're not an independent person, if you don't have knowledge, no one will respect you. That is what he's trying to say, that our freedom, our vision of freedom has started from War of Independence. Until then from then only we are trying to achieve this vision, वैसे, and we need to take care and protect it, वैसा. Now what was the second vision? Let us see. My second vision for India is development. अभी उनका second vision क्या है? Freedom तो ठीक है, चलो, we have achieved till certain levels, but what about development? For 50 years we have been a developing nation. It is time to see ourselves as a developed nation. कि हम हमेशा सुनते हैं India is a developing country, but why not developed nation? Developed क्यों नहीं है? Why is it that it is still developing, वैसा. We are among the top 5 nations of the world in terms of GDP. GDP क्या होता है? Gross Domestic Product. वो क्या होता है बच्चे लोग? It is basically the total value of goods produced and services provided in a country. एक साल में, during a year, जो total number of goods and goods produced होते हैं ना, and जो services होती है उसका जो total value होता है ना, उसको हम GDP बोलते हैं. तो उसमें we are always among the top 5 nation in terms of GDP, and we have 10% growth rate in most areas. कि हमारे country का growth rate भी अच्छा है, plus
we are always counted as among the top countries in GDP. Still, why are we developing nation वैसा? Why aren't we developed? ये उनका thought है वैसा. Our poverty level are falling and our achievements are being globally recognized today. वो वही बोल रहे कि आप पोवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग, कि जो पोवर्टी लेवल है कि वो तो कम होती जा रही है एंड आर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मतलब क्या? टू नोटिस एंड एक्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर गेटिंग टू नो आर अचीवमेंट्स. दे आर नोइंग कि इन वॉट ऑल फील्ड वी एज अ कंट्री आर अचीविंग थिंग्स वैसे. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation. इतना सब होने के बाद भी we don't have, he's saying that we have this lack of respect or lack of self-confidence to be called as a developed nation वैसे. Just a sec, हाँ. Yet, we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliant and self-assured. Isn't this right? तो वो वही हमको बोल रहे हैं हमारा GDP लेवल अच्छा है, we as a production we are very good, we have achieved so many things. Still, why do we lack self-confidence or self-reliant? Self-reliant is self-dependent and self-assured about a मतलब about the position of a developed nation वैसा. Isn't this right? तो वो वही हमें बोल रहे हैं, is this right? Like, why are we lacking behind वैसे. India must stand up to the world. मतलब क्या? That India should be brave enough to face challenges. It should be equal, like whenever compared to other countries, we should also be equally competing with each other. That is what it means. India must stand up to the world. मतलब क्या? That India should be brave enough to stand up and face challenges. That whenever we are being compared with other countries, we should be equally competing with them वैसा. So this was the second vision, that was development. First was freedom, that was achieved to a certain level. Development is also there, but then why isn't it called a developed country वैसा. And the third one is, I have a third vision, that India must stand up to the world or no one will respect us. वो क्या बोलते हैं? दैट आई हैव अ थर्ड विजन, दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड, दैट इक्वली इंडिया को भी लोगों के साथ इक्वली काउंट होना चाहिए वैसा. एंड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस. अगर इफ़ वी डोंट डू दिस देन वी वोंट बी रिस्पेक्टेड वैसा. ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ. ओके के मतलब वही कि अभी हम वी आर कंसिडर्ड एज अ ताकतफुल कंट्री और एज अ पावरफुल कंट्री, then only powerful countries will become our friends, and that is how we will achieve their support, and that is how a strength, only strength represents strength, is what this means. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. तो वो वही बोल रहे कि मिलिट्री स्ट्रांग हुआ बट इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं हुआ तो वैसे नहीं चलेगा. दैट बोथ शुड गो हैंड इन हैंड, दैट बोथ द वेज वी शुड बी पावरफुल इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिट्रीली वैसा. वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बेरस्ड टू रिकॉग्नाइज आवर ओन स्ट्रेंथ, आर अचीवमेंट्स, कि जो हमारे स्ट्रेंथ है, व्हाट आर आर स्ट्रेंथ, व्हाट आर आर अचीवमेंट्स, वाई आर वी एम्बेरस्ड टू रिकॉग्नाइज इट, उसको पहचानने के लिए वाई आर वी एम्बेरस्ड वैसा. We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? वो वही बोल रहे that we have so many successful stories, but what we keep on listening, या फिर क्या होता है हमेशा दिखाई देता है हाँ यही प्रॉब्लम है इंडिया का वही. So वो वही बोल रहे that why are we into the negative part most, and why is the achievement and the success hiding behind? We are the second largest producer of wheat in the world. Second largest. We are the second largest producer of rice. We are the first in the milk production. We are number one in remote sensing satellites. Remote sensing satellites मतलब क्या होते हैं? The man-made satellites which we launched. which we launch into space for communication, weather वैसे. तो वो वही बोल रहे कि these are so many things which are our plus points. ये हमारे
प्लस पॉइंट्स है दैट वी आर गुड इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट, देन वी आर गुड इन मिल्क प्रोडक्शन, देन हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है. तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लस पॉइंट्स है, ये सारे हमारे अचीवमेंट्स है. ये सारे क्यों नहीं लोग देखते? वाई ऑलवेज वी कीप क्राइंग के ओके इंडिया है, ये प्रॉब्लम तो रहेगा ही वैसे. दैट वाई ओनली always negative point is considered more rather than positive. Look at Dr Sudarshan. He has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disasters. कि वो वही बोल रहे कि जो डॉक्टर सुदर्शन करके थे, उन्होंने एक पूरे विलेज को सेल्फ सस्टेन, मतलब क्या कि प्रोवाइडिंग फॉर वन नीड्स, वैसे तो उन्होंने पूरे विलेज को एकदम सुधार दिया. ये एक बड़ा सा मिलियन सा जैसा अचीवमेंट है. बट वाई आवर मीडिया इज़ ऑलवेज ऑब्सेस्ड मतलब constantly talking or worrying about something. So why is always media looking at the bad part and failure and disaster rather than looking at all of such positive parts? वैसे do we not realize that self respect comes with self reliance? कि वो वही बोल रहे self reliance is self dependent. तो वो वही बोल रहे कि don't we know that if we are self dependent तभी हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा ना. अगर हम आखा टाइम किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कहाँ से लोग हमें सेल्फ रिस्पेक्ट देने वाले. वैसा he further says, I was in Tel Aviv once and I was reading the Israel newspaper. तो वो उनका एक experience share कर रहे that he was in Tel Aviv and he was reading this Israel newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck, but the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years has transferred his desert land into an orchid farm and granary. कि वो वही बोल रहे कि उस टाइम पे ना वहाँ पे वो प्लेस में बहुत सारे बॉम्ब अटैक्स एंड बॉम्बार्डमेंट्स मतलब वही के जो बॉम्ब के जो अटैक्स होते एंड लॉट ऑफ अटैक्स एंड ब्लड शेड एवरीवेयर, वो सब हुआ था. तभी यूजुअली अगर ऐसा कुछ इंडिया में हो तो पूरे पेपर में वही आता रहता है. तो वो वही बोल रहे थे बट उस टाइम पे एवरीवन वाज स्ट्रक, बट स्टिल जो फ्रंट पेज था उसमें एक जूइश जेंटलमैन जो था कि उसने क्या किया था, उसने अपने डेजर्ट लैंड को पूरा ऑर्किड फार्म एंड ग्रेनरी, मतलब उसने वहाँ पे प्लांट्स उगाए थे. तो वो उसका फर्स्ट पेज पे था. वैसा मतलब व्हाट डज दिस सेज के द स्टार्टिंग ऑफ द पेज इज़ नॉट नेगेटिव, it is something which inspire others or it is something which is positive. वैसे it was the inspiring picture that everyone woke up to. That's what ये जो पहला पेज देखते हैं हम न्यूज़पेपर में, right, that is something which is inspiring. वैसे the gory details of killing, bombardments and death were inside the newspaper. कि वो वही बोल रहे gories which involves bloodshed and violence. तो ये सारी जो इवेंट्स के बारे में या इसके बारे में जो सारा आर्टिकल था वो सब अंदर था. the first page was a positive one. वैसा buried among other news, isn't it possible in our country? तो वो वही बोल रहे हमारे कंट्री में भी ना ऐसा कुछ हुआ तो पूरा न्यूज़पेपर में वही आया रहेगा. तो वो वही बोल रहे कि ऐसा कुछ हमारे कंट्री में पॉसिबल नहीं है क्या. आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. कि वो वही बोल रहे कि नाउ आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग दैट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग. आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप इंडिया. Another question, why are we as a nation so obsessed with foreign things? कि वो वही बोल रहे कि हमेशा हमारे अंदर भी एक क्रेज़ होता है कि फॉरेन थिंग्स. वाई हमारे इंडिया में देर आर सो मैनी सच प्रोडक्ट्स एंड सो मैनी सच ब्यूटिफुल थिंग्स. अभी तो वी हैव सीन लोकल फॉर वोकल वाला थिंग ऑल्सो. वो वही बोल रहे दैट वाई आर वी ऑलवेज ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स. वी वॉन्ट फॉरेन टीवीज, वी वॉन्ट फॉरेन शर्ट्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी. वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरी इम्पोर्टेड? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस? वो बार बार वही पूछ रहे दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कभी आएगा जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे. दैट वाई आर वी ऑलवेज ऑब्सेस्ड विथ ऑल दीज फॉरेन थिंग्स, फॉरेन शर्ट, टेक्नोलॉजी. वैसे
I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. ओके तो वो वही अपना इंसिडेंट बोल रहे दैट मैं यही लेक्चर दे रहा था ना, तो उस टाइम पे 14 ईयर लड़की ने मुझे अपने ऑटोग्राफ मांगा एंड आई आस्क्ड व्हाट इज़ हर गोल इन लाइफ. शी रिप्लाइड आई वांट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, कि मुझे एक डेवलप्ड इंडिया में रहना है. वैसे for her, you and I will have to build this developed India. You must proclaim is declare confidently to all. कि वो वही बोल रहे कि उसके लिए हमें एक ऐसा कंट्री में रहना है जो डेवलप्ड हो. समझा जो उनके 3 विजन्स क्या थे. फर्स्ट वाज फ्रीडम तो उन्होंने तो भी बोला चलो वी हैव अचीव टू सम एक्सटेंट. द सेकेंड वाज डेवलपमेंट, दैट वाई ऑलवेज डेवलपिंग वैसा क्यों, डेवलप्ड क्यों नहीं वैसे. एंड द थर्ड वाज स्टैंडिंग अप इज़ टू बेसिकली क्या हमने देखा, स्टैंडिंग अप मतलब कि बीइंग ब्रेव एंड रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, टू फेस चैलेंजेस वैसा. सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज चैप्टर. अभी हम आगे का फटाक से एक्सरसाइज देख लेते हैं. देखो फर्स्ट वन इज़ कंप्लीट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रोफाइल. ये तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा. द टाइटल क्या होगा, उनको टाइटल क्या दिया है, देखो फर्स्ट पेज पे आओ, हमने पहले ही देखा इट ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, दैट वुड बी द टाइटल. प्रोफेशन हमने देखा, मिसाइल, सैटेलाइट, या तो ये सब आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगी. सिंपल ढूंढ के आप लोग लिखो. सी द थिंग्स विच आई फील विच इज़ ईजी एंड यू ऑल गाइज कैन डू, आई लेट यू डू इट वैसा. फाइन. सेकेंड पे आ जाओ. सब क्वेश्चन 2, using a dictionary or internet, note down the main differences. What is the difference between a developing nation and a developed nation? हमने अभी इतना बोला developing, developed nation, दोनों में difference क्या है बच्चा लोग. developed nation अभी हम लोग बोलते हैं India is a developing nation, developing country. developing nation मतलब क्या होता है, that countries that are less industrialized and have low per capita income level. Okay, country that are less industrialized and have low per capita income levels. And what is a developed nation? The country that are more industrialized and have higher per capita income level. ठीक है. फर्स्ट वाला मैंने बोला, अभी मैं थर्ड वाला बताती हूँ. आज स्ट्रेंथ एंड अचीवमेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या है. स्ट्रेंथ मतलब क्या एंड अचीवमेंट्स मतलब क्या. देखो स्ट्रेंथ इज़ थिंग्स विच यू आर गुड एट इट, कि जो चीज़ आप जिसमें आप अच्छे हो, आपके टैलेंट्स हुए या आपका फोर्टे हुआ कि जिसमें आप अच्छे हो, इज़ योर स्ट्रेंथ. एंड अचीवमेंट इज़ थिंग्स विच यू माइट बी नॉट गुड एट इट, आप नहीं हो उसमें अच्छे, बट यू वर्क हार्ड एंड गिव योर बेस्ट टू अचीव इट. बराबर ना. अब समझो मुझे मैथ्स नहीं पसंद, पर मैं तो भी उसमें अगर अच्छा मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला रही हूँ, तो दैट इज़ माई अचीवमेंट, बिकॉज दैट वॉज समथिंग विच वॉज समथिंग आई वॉज नॉट गुड एट इट, बट आई वर्कड हार्ड एंड आई अचीव्ड माई मार्क्स, सो दैट इज़ अचीवमेंट. समझा. स्ट्रेंथ इज थिंग्स विच यू आर गुड एट इट, एंड अचीवमेंट्स इज यू आर नॉट गुड एट इट बट यू वर्क हार्ड एंड ट्राई टू अचीव इट. समझा. देखो 2 मैंने एग्जाम्पल दिए, बाकी के 3 आप लोग करो. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ इट. फाइंड एविडेंस फ्रॉम द लेसन एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. फाइन. उसमें देखो कौन सा है. वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स. अभी हम लोग ने देखा ना कि वी वांट फॉरेन टीवी, फॉरेन शर्ट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, बहुत बारी. तो इसमें आपको आपका एग्जाम्पल लिखना है कि वेयर डू यू, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है वेर यू फाइंड के या कि हम इंडियन सच में फॉरेन थिंग्स से ऑब्सेस्ड है. फाइन. लास्ट वाला देखो, सेकेंड लास्ट. इन इज़राइल द मीडिया हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. कौन सा देखा हमने इंसिडेंट, ये वो वाला जिसमें वो बोलते हैं कि इतना सारा बम्बार्डमेंट्स हुआ, देयर वाज ब्लड रश एंड ऑल, बट स्टिल द फर्स्ट पेज वाज समथिंग विच वाज पॉजिटिव. सो या बट हम लोग को इन योर ओन वर्ड्स लिखना है, तो थोड़ा खुद के वर्ड्स में वैसे. कम नेक्स्ट. सब क्वेश्चन 4. पिक आउट
some sentence from the lesson that convey a general truth. ये हमने देखा that if we are not free no one will respect us. फिर एक ये भी है, देखो, कम टू पेज नंबर, मतलब जो सेकंड पेज है ना उस पे आ जाओ, उस पे देखो, वहाँ पे लिखा था that only strength respects strength. ये हमने अभी देखा ना, किधर था ये, देखो सेकेंड 41 पेज पे वो स्टैंड अप लिखा है ना, फर्स्ट पैराग्राफ के उसके नीचे, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, दैट इज़ ऑल्सो अ जनरल ट्रुथ. या फिर हम ये भी लिख सकते जो वो बार बार पूछ रहे थे, नहीं बट वो क्वेश्चन हो जाएगा, डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विद सेल्फ रिलायंस. नो, दैट वुड बी क्वेश्चन, डोंट राइट दैट. ठीक है, सब क्वेश्चन 4 हो गया. 5 क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द पोएम, दैट इज समथिंग यू नीड टू डू. फिर है ग्रामर, ग्रामर विल डू टुगेदर. ओके, चलो. सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज चैप्टर. आई होप आपको 3 विजन समझे. यू ऑल्सो ट्राई वर्किंग एंड नाउ इन सच सिचुएशन ट्राई गोइंग नेशनल, लाइक नेशन का चीज़ें यूज़ करना सीखो. वो वोकल जो हम अभी देख रहे, राइट, तो वैसा कुछ ट्राई करो खुद से. एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज चैप्टर. आई होप आपको सब समझा हो. कोई भी डाउट हो लिख के रखो, विल फर्दर डिस्कस इट. चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय.